बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जो आज का हम विदा कर रहे हैं ये हस्बे मामूल मेरी जो हिस्ट्री की रिसर्च है ब्लड बाथ इन ईस्ट बंगाल इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान उस बुक से है और हम सक्सेसिवली इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये अभी तक हम इस जगह तक पहुँचे थे लास्ट जो विलाग में किया था डिसमिसल ऑफ फजल हक मिनिस्ट्री बाई प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली गोबरा। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि 1949 से 1950 तक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ ईस्ट बंगाल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग दैट विच वाज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इन मार्च 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। लेफ्ट खान की गवर्नमेंट थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ which was considered a base and step toward the future constitution with a lot of reservation from East Pakistan minority legislatures, क्योंकि 25% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं पर कॉन्स्टिट्यूट करती थी, तो इसलिए उनके जज्बात का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता था। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया, लेकिन इस पर ईस्ट पाकिस्तान से जो लेजिस्लेचर्स थे माइनॉरिटी उनने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया। रेजोल्यूशन वाज ए मिक्सचर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वाइल रिमेनिंग विद इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम, यानी कुरान और सुन्नत से हटकर कोई चीज़ नहीं बनाई गई। एज पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सेज दैट स्टेट विल एक्सरसाइज अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाई हिम, यानी बाई गॉड। ए हिंदू मेंबर फॉर एग्जाम्पल आस्क्ड व्हाट आर दोज लिमिट्स, Who will interpret them? ये बड़ी अहम बात थी। देखें, कुरान में आए थे तो उसकी आगे तफसीर भी तो बयान करनी है। Then who will interpret that? ये उसकी बात जो थी बड़ी एक रीजनेबल बात थी कि ये आपने जो कह दिया कि विद इन द लिमिट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, ये बात तो ठीक है कि वो लिमिट्स क्या होंगी, हु विल इंटरप्रेट देम। डॉक्टर कुरैशी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, ये असेंबली के मेंबर थे ना, और माई रिस्पेक्टेड मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। अब ये जो दोनों मुसलमान हैं, ये जब इसे इंटरप्रेट करेंगे तो एक जो लेटेस्ट एजुकेशन वेस्टर्न का नुमाइंदा होगा इश्तियाक हुसैन कुरैशी, और दूसरा रिलीजियस एजुकेशन का नुमाइंदा होगा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। उसने एक मिसाल दी। The Hindu members of the assembly had serious apprehensions about the state of minorities in the future Islamic state, कि minorities के साथ क्या होगा। They were of the view that orthodox members of the assembly will interpret Islam in their own way, as contrary to enlightened Muslim League members, but Prime Minister Liaquat Ali Khan ruled out the rule of theocracy। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई मजहबी या उस तरह की स्टेट नहीं है, तो ये तो डेमोक्रेसी है, इसमें आप इसकी फिक्र न करें। द थ्री इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस ऑफ द मुस्लिम लीग, दैट इज 1940 रेजोल्यूशन, 1941 मद्रास रेजोल्यूशन एंड 1946 मुस्लिम लीग लेजिस्लेचर convention had no mention of an Islamic state. Almost all top leaders of the Muslim League from East Pakistan, West Pakistan and from Indian Muslims were highly qualified on the pattern of modern Western education, and they never talked about a theocratic type of the state of Pakistan. Theocracy मुख्तलिफ चीज़ है कि वो फंडामेंटल जो उसूल हैं उसके इस्लाम के या मज़हब के, तो उसी पर वो आगे चलेगा सिस्टम। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो एक यूनिवर्सल है, वो सारी दुनिया में एक ही ऐसी होती है। Those who were generally supposed to favor theocracy were not in favor of the creation of Pakistan। यानी उन्होंने कहा कि ये जो theocracy के मजहबी स्टेट बनाना चाहते थे इन एक्सट्रीम पर, उन्होंने तो पाकिस्तान की फेवर नहीं की। लाइक जमात इस्लामी, जमात उलमाए हिंद एक्स्ट्रा, the Muslim League top leaders like Qaid Azam and Sorwardi even could not speak Urdu and Bengali properly। ये दोनों इंग्लिश स्पीकर थे। Qaid Azam usually spoke in English and Sorwardi learned Bengali after the age of 35 years। How these people could have thought of theocratic state
but now things were moving otherwise. Though Prime Minister said in clear terms that everything will be decided through the will of the chosen representative. So there is no question of the establishment of theocracy. Still, the resolution provided chances to religious adventurists. यानी आप तो नहीं करेंगे ये जो लोग हैं कुछ भी जमहूरियत के ही आपके लिए काम करेंगे, लेकिन फिर भी जो एडवेंचरस टाइप के जो लोग हैं, एडवेंचर ही होती है, जो मौलवी टाइप जो लोग ये करेंगे, तो ये जो है तो ये इनको फिर कौन रोकेगा. Still, the resolution provided chances to religious adventurists and the non-entities to exploit the sacred name of Islam and put in danger the very foundation of the country from time to time. The religious parties, though never have been majority parties of the Constituent Assembly of Pakistan, always use the name of Islam for their survival, having the least interest in the common national problem of East and West Pakistan. Start. Though Prime Minister said in clear terms that everything will be decided through the will of the chosen representative, लेकिन ये जो इस्लाम का सेक्रेट नाम है, ये उसको बाद में ये बात अपनी जगह पर मुसलमान हकीकत हुई कि बाद में लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्लाम किया. The situation in East Pakistan was much more complicated, as the 25% Hindu population felt not to be equal citizens of Pakistan. ये उनका ऐसे कोई जिक्र नहीं किया गया, हालांकि अगर आप इस्लामिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए गारंटीज आप देंगे, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था. ये तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में 56 में जाकर बना. The democracy-loving, highly educated citizens of both East and West Pakistan always had reservations that religious vested interest will use the name of Islam for their personal interest. और ये कुछ हुआ, अभी तक हो रहा है, और ये कुछ हुआ अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपने मुफाद के लिए रिलीजन का नाम यूज़ किया गया. On 12 March 1949, an objective resolution was adopted and basic principal committee report was constituted to frame the constitution. The committee had 24 members, of whom 7 were from East Pakistan and rest were from Western wing, although East Pakistan had the majority in the central legislature. Presentation of basic principal committee report in the National Assembly. On September 20th, Liaquat Ali Khan presented the interim report of the basic principles committee in the assembly. It was originally rejected in East Pakistan. East Pakistan objected to the bicameral legislature. In the upper house, its representation would be equal to the smallest unit, and in the lower house, composition has not been mentioned. Lower house mean assembly, Qawmi assembly. Since it was recommended that both houses should have equal powers, and in case of a dispute, a joint session of both the houses was to take a decision. The Bengalis apprehended that their existing majority in central legislature would be reduced to a minority or at least withheld down to parity. यानी वो असम्बली में अक्सरियत में थे, लेकिन ये अगर ये फार्मूला अप्लाई किया गया तो वो हालांकि उनकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन पैरिटी बराबरी के तो उसके ऊपर आ जाएंगे वेस्ट के साथ. Bengalis feared that there will be a unitary central government and East Pakistan would continue as a colony of West Pakistan. The other injustice in their view was that Urdu was recommended as the only national language. They thought that their sacrifices for the Bengali language became fruitless. Prime Minister failed to realize the seriousness, the serious issues of East Pakistan. The East Pakistan Muslim League Working Committee criticized the interim report. यानी जो पार्टी यहाँ पर जिसकी हुकूमत थी पाकिस्तान में, तो उसी की पार्टी की ईस्टर्न विंग ने इसको कंडेम किया, इसको क्रिटिसाइज किया. In the Provincial Muslim League Council meeting in which
Prime Minister also participated. Some Muslim League members termed the committee report as anti-Bengali. The Orthodox religious elements were also not happy with the report, as in their opinion, the report was insufficient to establish Islamic rule in Pakistan. यानी दोनों तबके, Democrat और fundamentalist religious people, they were not happy with objective resolution. So the Prime Minister went to the Constituent Assembly on 21 November to get a postponement of the interim report. इसको postpone कर देते हैं. Setting up of the Central Committee for Democratic Federation in East Pakistan. After the Basic Principle Committee report, a Central Committee of the Democratic Freedom Federation was set up to protect the constitutional rights of East Pakistan. A convention of all political parties were organized in November 1950 by Awami League, in which East Pakistan demands were presented as per the Pakistan Resolution of 1940. The following proposals were presented at the convention. Pakistan will be a federation consisting of East and West Pakistan, with a united parliament having equal representation from each wing. दोनों विंग की equal representation होगी. Central subjects of the federation will be defense and foreign policy. ये आखिर तक ये डिमांड करते रहे 70 तक भी. Separate units of defense will be established in Eastern Wing, with 2 regional general officers commanding in East and West Pakistan. यानी एक commanding officer West Pakistan में हो और दूसरा East Pakistan में, और East Pakistan के लिए separate defense तरतीब दिया जाए. Regional defense forces will be separately managed by each wing. A regional foreign affairs office will be opened in East Pakistan. Taxes imposed by federal government would be on some specified item. Any new taxation will be with the consent of each region. यानी कोई नया टैक्स आप लेंगे तो सेंट्रल उसे न लगाए बल्कि उस रीजन से यानी ईस्ट पाकिस्तान से और वेस्ट पाकिस्तान से पूछ कर ले वो टैक्स लगाया जाए. Liaquat Ali Khan proposal of parity between the two wings. Prime Minister Liaquat Ali Khan proposed to the members of the National Assembly from East Pakistan the parity between the two wings, बराबरी की सभा of Pakistan in the National Assembly. यानी जितने एक विंग से होंगे उतने दूसरे से होंगे. Which was accepted by them, including A.K. Fazlihar. This was a great constitutional success of Liaquat Ali Khan government. Punjab reservation on basic principle committee report. अब वो satisfied हो, अब पंजाब satisfied नहीं हो रहा था. After Liaquat Ali Khan, Nizamuddin succeeded him as Prime Minister. He presented the second draft constitution on 22nd December 1952. The draft provided parity between the two wings, election on an adult franchise basis, and bicameral legislature at the center, yani Senate or Qawmi Assembly, bicameral legislature. This modified draft was not acceptable to Punjab due to the equal representation of both wings. Punjabi reservation was that in case of alliance of East Pakistan with some other provinces, Punjab will stand nowhere. In their opinion, East Pakistan was a homogeneous unit. एक किस्म के लोग थे, एक कल्चर था, एक ज़बान थी, homogeneous unit, most populated than any other province. So getting every chance of dominating Punjab. तो इस तरह उनका ख्याल था कि पंजाब को डोमिनेट कर जाएगा. पंजाब के लोग तकसीम हैं, उनकी एक ज़बान भी नहीं है, कोई सराकी बोलता है, कोई क्या बोलता है, पंजाबी बोलता है, जबकि ये होमोजेनस, ये हेट्रोजेनस है, वो होमोजेनस यूनिट है. पंजाबी legislature's majority came from landlord origin, who feared the Bengali anti-landlordism mentality. ये बहुत बड़ी बात थी, सबसे आम बात ये थी कि इनको हमेशा ये फियर रहता था कि हमारी जो लैंड से रिफॉर्म्स वो करेंगे, जो भी वज़ीर आज़म बंगाल से आएगा वहाँ पर तो लैंडलॉर्डिज्म है ही नहीं, जागीरदारी सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, हमें बड़ा नुकसान होता है. असम्बली में सारे लैंडलॉर्ड बैठे हुए थे वेस्ट पाकिस्तान असम्बली में. In case of approval of the draft constitution, they feared losing their position and present status due to their jagirs. In this regard, the East Pakistan Assembly already passed a bill in 1950, fixing land ceiling to the minimum level. ये एक बहुत बड़ी achievement थी East Pakistan Assembly. The parity formula of Nizamuddin was unacceptable to all the sections of society. East Pakistan leaders
wanted representation on a population basis. They also feared West Pakistan and particularly Punjab domination. Liberals were not happy with the importance given to the ulamas. अब कोई तबका भी खुश नहीं था. They invoked historic, cultural and linguistic arguments to rationalize that Pakistan was meant to be a secular state and the society must be secularized. ये ब्रॉडवेन के लोग थे. डेमोक्रेसी होती है, सेकुलर टाइप की गवर्नमेंट है, तो उसमें आप कोई इंटेंसली मजहब के खिलाफ काम क्यों कर दो, कि पागल क्यों हो गया. During a discussion on the committee report, the confederation among the two units came under debate to keep the country united, as in the long run it was impossible to keep two wings united. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी. अगर उसी वक्त कॉन्फेडरेशन बन जाती तो इतनी बड़ी किलिंग क्यों होती और दुनिया में बदनाम क्यों होता पाकिस्तान. मियाँ इफ्तिखारुद्दीन actually moved an amendment in the report to replace the term federation with confederation. ये पंजाब से मुस्लिम लीग ने ये काम किया, जिनका बहुत बड़ा कारनामा था. When Punjabi legislature showed reservation to draft constitution and apprehension toward this Pakistan being a big populated province having a chance to dominate Punjab, the reaction came from Chittagong district Muslim League demanding confederation of the two wings. पंजाब की तरफ से उनको हिंट मिला तो चिटागांग मुस्लिम लीग ने भी ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया. ये रेजोल्यूशन क्या था? दी अवामी लीग एंड रिलीजियस पार्टीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान demanded unicameral legislature on the basis of population having only defense, foreign affairs and currency with center. आखिर तक यही डिमांड रहा अवामी लीग का भी और दूसरे लोगों में, ईस्ट बंगाल में. Distribution of power between the center and provinces was another issue. Regional autonomy and not the strong center was the basic demand of East Pakistan. Smaller provinces also desired maximum autonomy rather than Punjab hegemony. Ruling Punjabi Muhajir elite was stressing on strong center to fulfill their own motives. The religious circles were also not happy due to the minimum inclusion of the Islamic classes and Ahmadis being not declared as non-Muslim. Nizamuddin humbleness and gentle behavior were never doubted, but as Prime Minister, leader of House and President of Muslim League, he failed to bring harmony between the East and West Pakistan. His unassertiveness and lack of dynamism widened the gulf to an extent that it became unbridgeable. तो ये विराट जो है, बस इसे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट के बाद से ख़त्म करते हैं. On 1 January 1953, the Assembly met to discuss the basic principal committee report. The President of the Assembly got the opinion of the members whether they wanted to discuss or wanted more time to study the report. The minority Hindu Congress members from East Pakistan, Siras Chandra, gave his opinion to discuss the report immediately, as the Bengalis did not want any delay in the constitution making. And if delayed further, they would demand fresh elections on an adult franchise basis. If any problem in constitution making and if we decide wrongly, the new assembly will make an amendment to it, but presently it must be concluded without any delay. The government side showed no interest in discussing this important document, which was a great failure of the Prime Minister. The government side legislatures remained silent during the discussion, although a week earlier Prime Minister was claiming the credit for himself in this regard. तो इसी पर मिला ख़त्म करते हैं. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ ईस्ट बंगाल और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर अगले विलाग में डिस्कस करेंगे. आप उसे सुन लें, अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स अ लॉट.